actually. Right? Between? So the first 12 columns are 2023. I know. So the first 12 columns are 2023. The last 12 columns are 2024. Okay? So let's look at the data again. So which do you prefer? Do you prefer working in Excel? Excel. Okay, so download the data again. Let's see. Yeah. Okay, so does the data make sense to you? So essentially, what this has become, let's delete that part. So the first 12 columns here are, so the first bit is that, okay? Your name, your gender, your year, what type of town you live in, where do you, blah, 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 and so on and so forth. Okay. And then you have got some people. So this is from where the 2024 data starts. Okay. And so if you're just doing pure data analysis, you can see there's already a problem. Some people write the word NA, some people are writing no, and some people are just leaving it
empty. I also have this issue. This one data set has gone about. So what will I do? I'll go back and look. Why is this? Has somebody given me 25-month data? Right? So if you go and look here, there's a 0. So that would have been a mistake. So most probably this whole data has been shifted by one trend here. So what we could do is cut this and paste it in. Now that's fine. Okay. One person has not given me the 25th month data. Okay, but let's do it. So now at least 12-month data is there for everyone. Agreed? So this is now my next problem. These are numbers. Decimal is fine. That's still a fractional number. The numbers have problems are these people who are giving male and female as 0 and as male and female rather than 0 and 1. If it was 0 and 1, life would have been easier. And same here, medium size down. This is alphabet. Okay. So there are two ways of doing it. We can either do it here or we can do it in Python. The one thing which I would like to change is this one, because we allowed people to give manual entry and each one has given them in a different style. So let's manually change every week. So it's once every week. Every day will make it 7, right? 3 will become 3. Often, frequent. What does that mean? 4. Good, well done. 2 to 3. 3. 3. 3 to 4. 4. And now that column is nice, isn't it? So we save that. So now I've got a nicer data to, yeah. Okay, we've got a nicer data. Excel. Okay, so Excel, we have cleaned everything. Now let's open it in Python, because these are easier for me to change in Python. You know why? Because these are structures which they have not entered data on their own. Okay, we could have done even that in Python. We could have done some natural language processing, but I haven't taught you that thing. But here, when they write in hostel, everybody writes exactly the same word. Right? So we can just look for that word and change that particular word. Okay, so open this data in Python. Okay. It's not. So now let's see. So wait. So is that where you have? Yep. Date parse is true. Make date parse is true. Dates. S. I think it is S, right? What did we do yesterday? Has this read? Did you have yesterday's code, or have you deleted that? I just deleted it. That's all right. Can you go back to the shared drive? So if you go back here, I provided you all the lecture material as well. Okay. So it was in course of yesterday, wasn't it? D4. Let's check. Upside daisy. See, programming is easiest of them all. It looks hard, but okay, the algorithmic part may be mathematically a bit challenging. No, it was not yesterday. You know what? I could go, it would have been in Python basics. Nothing else, that's where it would be, right? So let's see, when did we first start opening a file? So that was data frame. This is still looking at basic data. When did we start copying data for the first time?
use the base data for the first time. This is still data manually generated. Oh, there it is. So parse dates, not date parse. Oh, come on, let's type that. So, the type dates. Run. Okay, so now I have the, look at the header. Do df.head. So just want to look at the first 5 columns. df.head. Well done. Okay, so that's the data we have. There's one problem here. It looked the timestamp, but it also gave another index. We want the index to be timestamp. Okay, so let's give the index to be timestamp. Is equal to, in bracket, single quotes, Control Z. We can come back. Single quotes. Good. Now run it again. Hold a second. What did we do mistake here? Is it called timestamp? Is it index column? Timestamp is not in the list. It is called timestamp, right? Let's copy and paste from previous code. So another trick is never ever delete a code. What's a feature list and why do I need one? Where did I give you the code basics? It was in Python basics. Go ahead. That was still my earlier data, so it would not have had index underscore call. So go back to your Python script. Index underscore call. This should be single, but what mistake am I doing here? We have included pandas and numpy, right? You know what? Even if we don't take, what am I doing mistake? Don't worry, we will remove that column. We can remove that column, worst case, right?
So let it be run it like this. And the next line, let's remove that column. We did a column removal yesterday, right? So let's remove the column from there and proceed. So now our next task would be in this column, your gender. There are some male and female. We want to change every male to 0, every female to 1. Okay, and it should be a line code. And if not, that you can do a bit of Google search how to do it. You have a problem, I will be there with you. You can't open the file. Where are you running Colab? Okay. What is the error? Go down. UTF code can't decode bytes. Where is your file? Can you see the file? Or is it corrupted? Do one thing. Bring the file back to your computer. Open it in Excel. Save it again. Save it by a different name. Okay? Or save it as Excel and then save it as back at CSV. There might be a dummy character. Yeah. बट हम लोग मेल फीमेल तो नहीं कर रहे हैं ना हमारी कॉलम का नाम है योर जेंडर the column name is not male female, it's your gender, right? So one thing which I would advise you to see if you can change all the males to 0, all the females to 1, and that you can do by one line in no here, right? क्या चल रहा है भाई? Any luck? कहाँ पर अटक रही है गाड़ी? फाइल पाथ मेरा दिखा रहा है. Let me see. कंप्यूटर थोड़ा ब्राइटन करेंगे आप बूढ़े लोगों के लिए? Okay. What's the error? See Python. Invalid syntax in that line. Go up in that line. पूरी कोड कभी मेरे पास लिखा करो. Python is an interpreted language, right? So if you can't get one thing to work, but अगर फाइल पढ़ना है तो फाइल should be in quotes, right? And again, break the code ताकि हम लोग एक एक करके एरर भी तो देख सकें. Go down. Let's see what's the next error. Okay. Now the error ये है. Expected 20 fields in line 4 saw 31. Line 4 यही है. एक और कोई next line error है. But data.column manual क्यों दे रहे हैं? It should be able to read it by itself. जब आप फाइल पढ़ेंगे, can I take the machine? If you guys can turn. So हमने फाइल पाथ डिफाइन कर ही दिया ऊपर में, तो I can't. Is it a local machine or Colab? Colab. So let's do one thing at a time, okay? So हम यहाँ पर आते हैं पहले. Let's यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बनाते हैं. Let's see can we read the file. अगर हम फाइल पढ़ ही नहीं पाए तो बाकी करने का क्या फायदा? We'll just read that thing. So is that the file path or is that the file name? File path आपने वेरिएबल ऑलरेडी बना दिया है और हम और क्या कर रहे हैं? हम डेट्स पार्स कर रहे हैं, राइट? Let's see. और यही नहीं काम करेगा तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है. File path is not. Yes, file path is not defined. अपने file underscore path कहा है.
Is it dates parse या parse dates? Parse dates. Okay. What? Self-loop memory. Colab use कर रहे हो, right? Can it see that file? कल इसी तरह से फाइल पढ़ पाए थे कि आज का इशू है? आज की issues हैं। Should not do the trick. Is that the path आपके इसमें? Yes, I copied the function and Where? clean functions with a 3 dot. Copy part. Okay, that's true. There's nothing wrong with that. Do you have yesterday's code or have we deleted it all? So what mistake are we doing here? There would be one typo somewhere. Under this BT. Another thing, let's just so let's open this. That's also a CSV file. कल का कोई ये नहीं है क्या? अच्छा यही इसी लाइन में है ना? Okay, then that's fine. What I could do is see if any is reading any file or not, for that matter. So it should be in double comma, and we don't need anything. Okay, let's do this. Let's see. Can you go? मुझे मैक पर स्क्रॉलिंग करने की आदत है ना. Ouch. Is it single finger scroll or double finger scroll for? So let's not do that. I think it can take file. Data. No. What's the name of the file? Is it data.csv or cleanup.csv? Cleanup.csv in brackets. Let's see if that's something as simple as that works. You know what? I don't need these right now, do I? It's not working. There's a problem with cleanup. फाइल अपलोड में करप्शन है. I can't open. Normally फाइल को भी देखना चाह रहे हैं तो हम देख नहीं पा रहे हैं.
Do you have the cleanup file on your computer? कहाँ है? Okay, let's do file, save as. कहाँ रखते हैं आप? Everything is in desktop. So let's save it as Excel. Yeah, let's save it as Excel for a minute. Close it. Close it. Where is the Excel file? कहाँ गया? There's an now save a copy. Now let's save it as a CSV file. So हमारा डेस्कटॉप पर जो क्लीनअप है, this is the comma separated file. Okay, let's upload this one. Let's see again. Okay. What's happening, people? Are you stuck still? कहाँ stuck हैं हम लोग? Which line is giving error? It's unable to read your file. Why? So first to just remove, can you see this file here? Why is it taking so long to read a simple CSV file? फाइल तो ठीक ही ठाक दिख रहा है. Don't need them. उसी पेज पर हो तो आप डायरेक्टली इससे भी जा सकते. So एक काम ये किया करो. So right now you have a problem in the sense कि आपका फाइल रीड अप नहीं हो पा रहा है. तो why have all of this code? Let's just do this much in हम लोग पूरी कोड लिख के फायदा क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कर सकते हैं. लेट्स जस्ट डू दिस. टाइम स्टैम्प इज नॉट इन लिस्ट. द इंडेक्स वाला इशू हो रहा है यहाँ पर. थिंक इट्स सेविंग टाइम स्टैम्प एज समथिंग एल्स, सम गैप. लेट्स जस्ट डू दिस एंड सी इफ यू कैन रीड द फाइल. Okay. Now we can read the file. Now we do the next step. So one of the issues which we had, it has got this CET word and AIM word from Google. So one thing which you could do is you could go back to your Excel file and just delete the damn line. This column, delete the whole column. Column को manually delete करना है हम लोग. But as of now, we can see it. Okay. So file जब पढ़ सकते हैं, now we can do the next step. Okay. I don't know. Run it. You're sitting with a computer, right? हमें तो पैसे भी नहीं. हाँ. 0 accuracy आ रही है. So first classifier has given 0 accuracy for male female based on financial. Actually, why should it? Could be true that it. Vendor वाला सही आ रहा है. 0 मतलब male female 88 है. हाँ. बाकी डेटा भी प्रिंट हो रहा है सही से. हाँ. बस वही. Let me see. So DF header को सारे हटाओ because it just prints. Okay. So you replaced male and female. Well done. कौन सा एस्टिमेटर यूज कर रहे हैं आप? रैंडम फॉरेस्ट यूज कर रहे हैं. 10 एस्टिमेटर तो बन ही नहीं पाएगा ना रैंडम फॉरेस्ट का. इसमें डेटा बहुत छोटा है.
So one thing which I would advise people Yes, sir. कि कोड को 2-3 भाग में तोड़ो. अदरवाइज क्या होता है ना कि हर बार जब आप कोड रन कर रहे हैं, Yes, sir. एवरी टाइम इट रन्स फ्रॉम स्क्रैच. अच्छा. क्यों? जब उतना वो कर ही चुका है, उसने मेमोरी में रख ही लिया है, तो क्यों पूरे को रन किया जाए? एक्चुअली हम तो कहेंगे कि इसको भी 2 भाग में तोड़ा जाए. Just the classifier. That's the only one which is of interest to us, right? Control Z. Control X. Control Y. Accuracy of random class. So, how do you divide your data? कितने % divide किया आपने? 0.2. So now let's plot. Let's print y test and y pred. वो तो हम देख सकते हैं ना मैनुअली चेक करके. If that was the last line it would have done. Actually, what we can do is split it in a code. Let's take accuracy prediction somewhere else. So that trick works with compile language. Okay. But if it's an interpreted language, क्यों नहीं line by line check किया जाए कहाँ error आ रहा है? So essentially, when you thought it's a boy, it's giving it a girl. When you're thinking it's girl, it's giving it a boy. That's what it is. ये हो रहा है, right? इसे 50-50 में 0. दोनों में 0 आ रहा है उसका. So let's do another fit. Okay. So estimator बढ़ाते हैं 4. See if that does any job. No. Let's change the random base. कहाँ है आप? शुरू में split कहाँ कर रही है डेटा को? इस लाइन में करना लोग ना. तो we can increase the random state का origin. Well, now at least you have got 50% accuracy. Okay. Right? Okay. So is 0 boy or 0 girl? So 0 female, 1 male. Okay. So what you can now do, because this is a small set of data, right? तो जो आपके feature size हम जहाँ निकाल रहे थे, Yes, sir. उससे you can figure out which one of the data it is using for testing. Okay. Okay. So if here I go say for 4. Still 50% accuracy. So it can predict that, but let's check test size बदलते हैं 40%. This will make it even worse, but we might be lucky. Okay. But so actually this is just y predicted दिखा रहा है ये. हाँ सर. Print. Oh God. Can you put no, not there. अब कीजिए तो उसको print. Run it again. And just this one. So this is nicer this time. So which is boy, which is girl for you? 1 male, 0 female. So 0 is female. Yes, sir. So we had 4 male and 3 female, and it thinks all of them are female. And now it thinks all of them are men.
Let's go for half data. Not bad. Yes, sir. Not Okay. bad at all. Yes, sir. We got it. 62% accuracy in prediction by doing very stupid thing. We'd use half the data for training and half for prediction using random forest. 62% is not bad considering you're only training with 8 data points. But you see, now the trick is you can start playing with various parameters to see where it trains properly. And this is where the overfitting strategy comes in. What if it fits for this data set but will not work elsewhere? Yes. Mm-hmm. So our hypothesis, which is that girls spent more, that has not been proven yet. What has been proven is that there is a possibility of separating boys and girls based on their spending patterns. So why don't you take the average of girls and average of boys? Or plot or do a time chart of that. Okay, good. आपका क्या हो रहा है? So did it work at that stage? Oh, so where are you stuck now? Which one? So your gender. What's the error? Key error your gender. See, the thing is, first you need, you're making male as 1 and female as -1, right? So let's see if this step works. Before going to size, which line is not working? The size line or? So why don't we just do here print, df_head. देखते हैं कितना दूर तक हुआ. Yeah, it's that line which is not working. आपकी गिनती कर रही है. So let's comment this line. Where is hash for commenting? And comment this also. Oh, sorry. It's that line which is not working. So, क्या गलती है इसमें? It is called your gender, right? Syntax error है कहीं? Key error your gender. Did you change the name of the columns or the column? Sorry, columns का name manually बदला आपने. Manually बदला था. Sir, only gender for gender and The other columns you just left it as it is. Try doing that. Can you edit this file here? Okay. What's happening there, guys? Still working? अटके हो तो call me. If there's an error coming, call me. I might be able to fix it. कहाँ चल रहा है आप लोग? कहाँ पहुँचे हो? Data read कर रहे हो? CSV file read हो गया? Show me. Don't write the whole code. यही तो गलती करते हैं आप. Okay? चंक में 4 लाइन का चंक लिखिए और उसी को इमीडिएटली इंटरप्रेट कीजिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं. You know how to do that? कि मैं दिखा दूं. आप करेंगे? Okay.
ना इनको करके देखो अभी, हमें आइडियली सबको भी कर दोगे तो हो जाएगा, बट हमारा ये डेटा बड़ा है ना, जस्ट इसको करके देखो. Can I have a look at you? Sorry. So it's funny, कुछ लोगों में इंडेक्स कॉलम नहीं काम कर रहा, आप में काम कर रहा है. ओके, so you have male 8 female. Okay, so now you have to change, say take column number 7 to column number so much as my training data. So जैसे आपने x बनाया, x को आपने क्या कहा, your generator. Y is column from here till that column there. Why do you have not a number for some people? Okay, those who have not given you data for the last 24 months. So what you could say, you can say, okay, column number 7 से लेके column number 18, 12 month के data पर ये करो. Okay. The whole idea is to give it as much data as possible. Okay, so just y को बनाइए, वहां से यहां तक लीजिए. Now you have x and y. Can I put a range over there? Yes, you can. It's a matrix, right? Okay. So search कीजिए how to find a range. So can I go through a flow chart of what we are expecting to do? So let's see which stage people are and where you are stuck. Okay. So first thing you should have done is your CSV file should be half decent. And if it's not reading, save the CSV file XLS and then save it again as CSV so it would remove any testing. Then you would have done your read CSV file. Is everyone been able to read their CSV file? Okay. After that, what you would have done is you would have changed the your gender column, male to a number, female to another number. Okay. That everyone has been able to do? Good. And after that, what you would have done, you would have said my Y, the output, is that your gender column. That's where stuck, or is that done as well? And your X is all the finance column. Let's just only give it the finance data. Okay? I think that's where some of you are stuck. And once you do that, rest all is whatever we did yesterday. Copy and paste from yesterday. Right? Yes, there's a hand raised up. I'll go and... Do you want me to come to you or do you want to say something? Okay. So instead of one table for management, can I filter it out and make a new table for me and then treat it? But if you make two different tables, how are you going to be able to classify? So in the last one. Why? What does it? So what's the advantage of doing that? You're shorting it, right? Short doesn't make any difference to me. You know why it doesn't? Because if you random forest use karoge, then you'll pick a random number. So it will train with random set of data, right? So sorting doesn't make any difference. But what I would advise you is to change, make it a numerical number. Okay. What you want? कहाँ अटके हो? तो अटके हो? हाँ. Then हम चाहते हैं random forest ये run करना. Can we predict gender based on your income? So, no. X is finances, Y is gender. Okay. So आपका error कहाँ हो रहा है? Can I have a look? ऊपर रखिएगा जरा. So X data set. So it has read the data. आपने सब कुछ पढ़ लिया, right? Oh, good. That's hard work. You went and changed everything to. Okay. And you renamed all the data sets. Okay. So my Y data is no more expenditure January. So that's also another thing which that's you could do as well कि हम January expenditure predict करें. But जब predict करेंगे तो सारे लोग का नहीं predict करेंगे ना, एक आदमी का predict करेंगे. Okay. Let's try to predict the gender part first. या क्या आप ये ही predict इसको भी
एक्चुअली यू नो व्हाट, ये भी बुरी चीज नहीं है. सॉरी, मैंने क्या किया, डिलीट तो नहीं किया आपके कोड को, डिलीट कर दिया. कंट्रोल सेट. So let's try to predict the 2024 expenditure. Okay, but अगर 2024 को expenditure predict करना चाहती है, then 2023 का financial data should be part of training. आप नेटवर्क को ट्रेन किससे कर रही हैं? It has got no, otherwise it has only got date of birth and financial information, right? तो 2023 का डेटा दीजिए और कहिए कि अब हमको बताइए 2024 में क्या होने वाला है. Then I can understand. Okay, right. Whole thing नहीं करना. There's just a subtle change from there. आप लोग मेरी ट्रेन छुड़वाइएगा इस तरह से. And you guys are driving me to Puri. If I miss the 7 o'clock train क्योंकि आपको मैं debug कर रहा था आप लोगों कोड को. So another problem which you can now pick up, we have 2023 data and 2024 data of everyone except 3 people. Can you predict for those 3 people? Okay? Sorry? हाँ ठीक है बुलाओ. Problem is good. चुपचाप बैठे रहना is not good. 0% accuracy. That's also not a bad answer. But then now we'll change. Look at, so what does 0% accuracy say? No. The hypothesis is wrong. हमने एक hypothesis में तो शुरू की कि इस financial data से we can tell you your gender. Right? So this data is either incomplete, more data would be good, useful, or this hypothesis is wrong. There is no difference between these two. Or random forest is not enough good enough predictor. Actually, simple decision tree try कीजिए rather than random forest. Decision tree classifier, just replace the word random forest. Save that. I'll come to your code and have a look. Just give me a second. So, one more thing मैं बताना चाहता था आपको. So show me your code. थोड़ा brighten कीजिएगा. Okay. So show me where do you create your random forest discriminator classifier. So अभी आपने number of estimator लगाए हैं 100. हमारे पास डेटा कितना है? 16, राइट? तो 16 में आप 4 से ज्यादा डिस्क्रिमिनेटर नहीं लगा पाइएगा. ट्री भी तो बन रहा है ना. Try to be something like 3 or 4. Okay. अब दूसरी चीज, it's still a very bad random forest. दूसरी चीज, कितना % डेटा आप ट्रेनिंग में लगा रहे हैं, कितना टेस्टिंग में लगा रहे हैं? स्प्लिट क्या है? 0.2 है. गुड. गो डाउन. एंड आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट दे रही है ना. So remove all these print df commands which you have in between because it's just showing me. Okay. Right. So आपके कोड में, why do you guys write big codes? छोटा कोड लिखा करो ना. So if you had all of this written separately, so काम करो. Random forest यहीं से बन रहा है ना. Cut it. Control X. यहाँ से एक और कोड स्निपेट बनाओ. So that बाकी सारा पहले से पढ़ा हुआ और बार बार नहीं पढ़ा जाएगा. We are only going to change these things now. Okay, so let's now see. पूरी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पढ़ने की जगह हमें क्या हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं ना कि हमें क्या प्रेडिक्ट करना था और क्या आया. So why don't you print here y test and y pred. एक लाइन में y test डालिए और दूसरी लाइन में y prediction डालिए. You could do in one, but ठीक है. आ जाएगा.
मुझे कंप्यूटर पर विश्वास नहीं है। सो गो डाउन, होल्ड अ सेकेंड, क्या प्रेडिक्ट कर रही हो? नहीं, गो अप, व्हाट इज वाई, व्हाट इज एक्स? ओके, हाँ नीचे जाना, जस्ट शो मी व्हाट इज वाई। वाई इज सिंपल कोड लिखने को कहते हैं, तुम लोग और टेढ़ा कोड बनाते हो। क्या कर रहे हो ये? डिस्प्ले द फर्स्ट 5 रोज, ये कहीं से कॉपी किया हुआ कोड है ना, उसको तुमने चेंज किया है। क्यों? लेबल इन कोड, क्यों? इतना सिंपल तो डेटा था, इतनी क्यों मेहनत कर रहे हो रे? उसके बाद तुमने मीडियन निकाल दिया डेटा का, डेटा तो गया घास चरने। The moment you calculated median, my data went up. 12 कॉलम का डेटा था, आपने एक कॉलम में कन्वर्ट कर दिया उसको। फिर फीचर इंडेक्स लगा रहे हो, फीचर इंडेक्स तो काफी सिंपल है, देयर इज मेल एंड फीमेल। इतनी मेहनत करने की जगह कल जो कोड लिखे थे उसको कॉपी करते तो बात दूसरी होती। कम ऑन, लेट मी सी, आई नीड इट। सरदार जी, could you move that side please and give me a place, or one of you stand and I will sit. तुम लोग ना कैसे नहीं छुआ जाता है? You always go like this. Error calculation doesn't matter. मेरे पास 2 सैंपल का हम टेस्ट कर रहे हैं, क्या जरूरत है इतनी फैंसी स्टैटिस्टिक्स करने की? ओके, लेट्स सी। हम इनको कॉपी करके फिर से पेस्ट करेंगे यहां पर। अगर आपने सिंपल कोड नहीं लिख पाएंगे आप, तो कॉम्प्लेक्स कोड की मेहनत कोशिश कीजिए ही मत। और कोड समझ में नहीं आया, विच मीन्स लिखना नहीं चाहिए। सो दैट्स द फाइल इन विच यू हैव सेव्ड इट। ठीक, ट्राई थ्रो काहे कर रहे हैं हम? एक्सेप्शन है आपके यहाँ कुछ? आर यू एक्सपेक्टिंग एन एक्सेप्शन? तो क्यों लिखा? कहीं उसने दूसरे कोड से यहाँ से कॉपी किया तो उसने भी लिखा था। नहीं, बट ट्राई थ्रो जब कहते हैं, व्हेन वी एक्सेप्ट एन एक्सेप्शन कि फाइल में कुछ गड़बड़ होगा, तब ये कीजिए। ओके, वी डोंट नीड इट राइट नाउ। सो गाइस, द अदर्स कैन टेक ए टी ब्रेक। हम लोग 20 मिनट में वैसे फिर लंच ब्रेक भी लेने वाले हैं। ओके, गो एंड हैव टी, अदरवाइज चाय ठंडी हो जाएगी और फिर इनको पूरी चाय पीनी पड़ेगी। ओके, वी डोंट नीड एक्सेप्शन, हमारा कोड अच्छा है, हमने डेटा खुद मैन्युअली चेक किया है, राइट? ये भी हमें पता है प्रिंट 5 रो करता है ये, राइट? हम फर्स्ट 5 रो प्रिंट कर लेंगे देखने के लिए कि क्या है, राइट? वाई रिक्वायर्ड कॉलम्स, जिस डेटा से आप लिए उसके पास 9 ही कॉलम था, आपके पास 25 कॉलम्स हैं। डोंट नीड दिस। ओके, एनकोड कैटेगोरिकल फीचर आप मेल फीमेल कहां कर रहे हैं इसको? न्यूमेरिकल कॉलम पाथ कोएस मीडियन ना। ओके, सो लेट्स सी हाउ डज माय डेटा लुक लाइक। डीएफ कहां है? फाइल रीडर कहां है? कोई बात नहीं, वो लाइन कहां पर है? Where do you read the line? कोई बात नहीं, एक्सट्रेन हो गया, इंपोर्ट फाइल, फाइल पाथ, प्रिंट डेटा, पहला वाला ही। आई एम राइटिंग फ्रेश कोड नाउ, राइट? तो हम जो आपका कंट्रोल F
CSV. आपका रीडिंग फाइल रीडिंग स्टेटमेंट कहाँ पर था, कहाँ पढ़ते हैं आप? वेयर यू रीड द फाइल? Here, right? So that's my file path. Let's read the file path. करते हैं कॉपी किया है ना, फाइल अंडरस्कोर पाथ को पढ़ेंगे हम. ओके, सिंपल. और हमारे फाइल में क्या है, हमारे फाइल में टाइम स्टैम्प्स है, राइट? तो पार्स अंडरस्कोर डेट्स क्या होंगे, ट्रू होंगे, राइट? और क्या है हमारे जो हमारा कॉलम है वो कौन सा कॉलम है, टाइम स्टैम्प वाला. ओके ना, अब हमें ये भी बताया गया है कि हमारे कॉलम में इसके पहले स्पेस है, तो लेट्स गिव इट अ स्पेस. हटाओ इसको. गुड, हमारा ये फाइल है. हमने फर्स्ट 5 लाइंस पढ़े, दिखने में ठीक लग रहा है. ओके, अब ये भी एक कॉलम है जो इसमें 2024 एक्सपेंडिचर और 2023 एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है. I'll be rather remove that. Okay. तो why don't we go in, कहाँ पे एक्सेल फाइल कहाँ है, ये कोलम में खुला हुआ है, कौन सा, ये वाला 224 ना. Let's see it here itself. So what I could do, क्योंकि ये वाला जो वर्डिंग है ना 2024 एक्सपेंडिचर, कैन आई डिलीट इट हियर, कैन आई एडिट इट हियर? No, it should be, it's a text file. ऐसे मूव विदाउट करता हूँ कोई. Okay, I can do it here. 2023 expenditure, 2024 expenditure. See, ये text file है, right? तो 2024. So you know, इनके पहले जो स्पेस लगा हुआ है ना, that's why it's causing problem. Otherwise, अगर हम इनको ऐसे रखते तो कोई इशू नहीं होती. So let's now do this line again. Okay, now let's see क्या हुआ इसको. इसको डिलीट करते हैं. Delete, was it able to? Oh, it did not change. Change किए भाई. ये मेहनत की हमने. नहीं चेंज किया. Where is it downloaded? और मेरे पास एनर्जी बिल्कुल मेरी रन लो कर रही है. Okay, you know what? Download. This is the one, right? खुल जा मेरे भाई, खुला हुआ है. It's open. Okay, right? अगर यहीं से एडिट करना है तो यहीं से करना है. Delete. Okay. There is one more error here regarding this GIAN. There is 1 0 here which has come here, and then if you look for everything after this month, it has gone 1 extra month. Okay. Oh, hold a second. आपने delete कर. I thought it was fishy.
And let us now delete this column. Clear. Okay, so that is my text. ठीक है, वही extra column मतलब डेटा कुछ गड़बड़ होगा यही ना. Let's do one thing. Let's give the last column to be 0 because that's a. Okay, let's leave the data as it is. So इसको हम अब upload करेंगे. Control save as desktop. थोड़ा different नाम दे देते हैं ताकि confuse ना करे. 225 करके. Unless 224 was your lucky number. क्या हो रहा है भाई? सेव तो कर दो. Who is Ranit Mishra? Well done. भाई लोग का कंप्यूटर लेके भागना चाहिए, राइट? 225 डाउनलोड्स में था क्या? 225 हमने भी बनाई ना, कहाँ बने? Okay. And now we are saying कि भैया the file name is now 22 upsy daisy. Okay. ठीक है. अब हम कह रहे हैं कि हमारा y जो है is nothing but वो डेटा का पीस है जिसके कॉलम का नाम क्या है? योर भैया आ रहे थे, आ जाओ. जेंडर. Okay, that's my y data. Let's do print तो हटाओ ही, बहुत स्पेस लेता है. I should be able to see the whole code at one go. Y dot just to y. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 16 columns ही है ना. I can see. Okay, it did not like me. What's the error? Your gender. स्पेलिंग सही था कि हमने कुछ गलत किया? ट्राई करते हैं. ठीक है, ये हमारा y हो गया, राइट? गुड. अब इसको हटा देंगे. अब हम इसको फिर से रन करेंगे so that I remove that thing, otherwise. And now we start writing the next code. Now I need my x data. x कौन सा डेटा होगा बताइए? नहीं, हम किस डेटा से प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्सपेंसेस से, राइट? तो एक्सपेंसेस वैल्यू कहाँ है? हमारे इस कॉलम से शुरू करता है. सो बेसिकली हम ये कहेंगे कि एक्सपेंसेस वाला जो कॉलम है वो इस कॉलम से शुरू होके अंत तक है. ओके, दैट्स ऑल. जब हमने ये काम कर दिया, वो काम मैं आपको करने को दूंगा, रेस्ट मैं आपको अभी लिख देता हूं. उसके बाद लाइफ बड़ी ही आसान है. उसके बाद सिंपल ये काम करना है. सी हम लोग एक्स ट्रेन लेंगे, वाई ट्रेन लेंगे. हमने एक्स और वाई आइडेंटिफाई कर देना. ओके, देन व्हाट आई विल नीड टू डू, सॉरी, छोटा कोड लिखो, इतना भी नहीं करें. उसके बाद हम कहेंगे कि ट्रेन और टेस्ट को डिवाइड करो बिटवीन एक्स एंड वाई, और यहाँ पर हम छोटा एक्स और छोटा वाई ले रहे हैं. ओके, सो वी डिवाइड इट इन 20% थिंग. जब हमने डिवाइड कर लिया, देन हम कहेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट एस्टिमेटर बनाओ. डेटा 16 ही है तो हैव स्मॉल नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स. ओके, मॉडल फिट करो बिटवीन दैट ट्रेन, मॉडल प्रेडिक्ट करो. डन.
ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्यूरेसी भले लिख दीजिए आप, अगर उतना ही शौक है तो राइट प्रिंट वाई टेस्ट, हमारा डेटा वाई टेस्ट क्या था, एंड प्रिंट हमारा वाई प्रेडिक्टेड क्या है। दैट्स इट। एसेंशियली क्या कर रहे हैं हम, हमने रैंडम फॉरेस्ट मॉडल लिया, उसको फिट किया, प्रेडिक्ट किया। हमारा कोड कितना छोटा है आपसे। तो आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, अगर सब कुछ करूंगा तो फिर आपके रहने का क्या फायदा। टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर एक्स, दैट्स इट। उसके बाद यू कैन प्ले विद दिस थिंग, यू कैन प्ले विद different random states, you can play with different number of estimators, but this is too simple a code for you guys to make life difficult. कितने टोटल कितने लाइन हुए यहाँ पर, 4 इनके 1 2 3 और 5। एक्चुअली एक और काम करना है, सॉरी ये भी मैंने नहीं किया। सो योर डेटा जो है वो भी मेल फीमेल में है, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू 0 and 1। ओके, सो you have to write 3 more lines of code. It cannot be longer. So there is a reason जब मैंने शुरू किया था पहले दिन, मैं आपको सीधे कोलैब और इस पर नहीं गया था। I made you type things. कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग नेट से प्रोग्रामिंग जब सीखते हैं तो you always go up with a complex programming, कॉपी करते हैं उसको लाइन बाय लाइन सीखने की कोशिश करते हैं। I will highly advise you guys pick a book on Python. Okay? और शुरू में जब वो बेसिक कैरेक्टर से शुरू, याद है मैंने किससे शुरू किया था, फ्लोट क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। टाइप योर कोड इनिशियली, डोंट कॉपी एंड पेस्ट, तब आपको पता चलेगा कि टाइप करने में क्या, क्यों टाइप कर रहे हैं ये चीज। तो मेरा कोड जोड़ के 5-10 लाइन का है, दैट्स इट। एंड देयर ओनली मेन कोड तो बस यही 3 लाइन है। मॉडल डिफाइन कीजिए, मॉडल फिट कीजिए, मॉडल प्रेडिक्ट कीजिए, उसके पहले खाली एक्स और वाई डिफाइन करना है। ओके ठीक है, आपका क्या चल रहा है, कहाँ फंसे हैं? हाँ हाँ, आपने -1 में मैप करने को कहा है, क्या मैप कर, हाँ ओके। डज इट कॉल इट मेल या डज इट कॉल इट फीमेल? एक्सेल में है, देखिए फीमेल नहीं है, फीमेल के पहले 2 स्पेस है, एवरीथिंग। सो डू मेल के पहले 2 स्पेस दीजिए, फीमेल के पहले 2 स्पेस दीजिए। And run it again. एक स्पेस है कि 2 है, वही देख रहा हूं मैं। 1 स्पेस है, सॉरी 1 स्पेस बिफोर, 2 स्पेस बिफोर फीमेल, 1 space before, 2 space before male and female. You know what? Just delete all the spaces from CSV file. You know how to do that. Okay? जहां भी डबल स्पेसिंग उसको हटा दीजिए। ओके, ये आप लोग कीजिएगा। Go and have your tea. Actually, it's almost lunch break now, but still have your tea before we go for lunch. लंच में कितने बजे आना है भाई? टाइम है? We had a, आज लंच ले जाना था ना इनको गेस्ट हाउस में, तो अभी जा सकते हैं। Guys, have tea and we will do it after lunch. Okay? भैया रुकते हैं। या मैन्युफैक्चरिंग या प्लांट की कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डे टू डे ऑपरेशन के लिए क्या पैसा चाहिए, राइट? तो क्या होता है कि यू नीड नेट कैश आउटलेस, कैश आता है कैश जाता है, आपको
खर्चे होते हैं हर, और अगर इफ यू गेट एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कहीं हम पैसा इन्वेस्ट कर सके तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, इफ यू डोंट हैव गुड अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी देयर, यू गोइंग टू या तो पेमेंट डिले कीजिएगा, या फिर अगर पेमेंट करना हो तो यू हैव टू सेल योर एसेट्स, और if there was a profitable investment opportunity you will not be able to invest. Agreed? या फिर आपको लोन लेना पड़ेगा बैंक से at a